सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में पटना वुमेंस कॉलेज में जो कल जो होने वाला टेस्ट है यानी 16 जून को जो टेस्ट होगा, जिसमें आपका बीए का टेस्ट है। और बीए के टेस्ट में एक आपका मेजर पेपर में आपका ज्योग्राफी भी आता है। और ज्योग्राफी के ऐसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पहले बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा कई सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था कि वो थोड़ा सा लंबा है। लेकिन आज मैं चीज़ों को रिड्यूस कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कौन कौन से क्वेश्चन मैच होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वैसे सारे क्वेश्चंस का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको ये लेक्चर, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के इस पीडीएफ को, और पीडीएफ को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सीरीज को, और एक करके आप सही तरीके से समझिएगा। पहला क्वेश्चन, सॉइल्स आर फाउंड बाय द विच प्रोसेस, देन यू हैव टू आंसर पीडोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड एट विच डिग्री, देन आपको आंसर करना है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, मेसोस्फेयर इज अ कंपोनेंट ऑफ विच, देन करेक्ट आंसर दैट इज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, अर्थ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 layers, द आउटर लेयर इज कॉल्ड, देन करेक्ट आंसर दैट इज अ क्रस्ट। अर्थ के केस में ध्यान रखना है, ये अपना कहलाता है क्रस्ट, ये अपना मेंटल और नीचे का कोर। कोर में 2 पोर्शन, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो मून का फॉर्मेशन हुआ था उसके रिलेटेड जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड द बिग स्प्लैट थ्योरी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का जो थ्योरी है वो आपका बिग बैंग थ्योरी है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का जो थ्योरी है वो नेबुला हाइपोथेसिस है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस। नेक्स्ट, आवर गैलेक्सी इज व्हाट, देन करेक्ट आंसर दैट इज अ मिल्की वे। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक लेयर प्रोटेक्टेड टू द लिविंग बींग्स फ्रॉम हार्मफुल रेज। हार्मफुल रेज से हमें कौन सा लेयर बचाता है, देन करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, यानी बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी ओजोनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर दोनों मिलकर के क्या करता है, हम लोग को हार्मफुल रेज से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंड ऑफ एस्टेरॉइड्स अदर्स इन द सोलर सिस्टम लाइज बिटवीन, यानी जो एस्टेरॉइड का बैंड है वो कहाँ बिलोंग करता है, किसके बीच में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड टू द वेनस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर कोर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ, मैंने बताया कि ये अर्थ के फॉर्मेशन में ये जो अपना इनसाइड है इसे हम लोग कोर कहते हैं, और इसमें 2 अपना पोर्शन होता है, एक अपना आउटर कोर इसे, और ये एक अपना इनर कोर। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनर कोर किस चीज़ का बना होता है, द आउटर कोर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आउटर कोर के रिगार्डिंग, द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ विच, देन करेक्ट आंसर दैट इज निकेल एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the currents that are formed in the mantle of the earth are classified as which, then correct answer that is a convection currents. Next question, the upper portion of mantle is known as which, then correct answer that is a asthenosphere. Next question, lithosphere is mostly composed of which, then correct answer that is a granite. Next question, what is the radius of earth, then correct answer that is a 6370 km. So next question, the intensity of an earthquake is measured in which, then correct answer that is a B, that is a Mercalli scale. Next question, fossils are remains of dead of which, then correct answer that is a plant and animal, means option C. Next question, magma refers to which, then correct answer that is a B. Next question, which one of the following is direct source of information about the interior of earth, then correct answer that is a earthquake waves. Next question, according to the plate tectonic concept, how many major plates are there, then correct answer that is just 7. Next question, the largest man-made canal in the world is which, then correct answer that is just Suez Canal. Next question, a plate is a portion of which, then correct answer lithosphere. Next question, which among the following is the biggest island of the world, then correct answer that is a Greenland. क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ विच अमंग द कह रहा था, इनमें से कह रहा था, तो ध्यान रखिएगा ये इनमें से ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड, देन करेक्ट आंसर दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज लोकेटेड एट विच प्लेस, देन करेक्ट आंसर दैट इज 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई टाइड्स आर देयर इन अ डे, देन करेक्ट आंसर दैट इज बी। Next question, the term the land of midnight sun,
is normally applied to which? Then correct answer, that is a Norway. Next, coals and petroleum found in which types of rocks? Then correct answer, that is a sedimentary rocks. Next, the parent material of soils is derived from which? Then correct answer, that is a sedimentary rocks. Next, which one of the following are the hardest minerals? Then correct answer, that is a diamond. Next, when magma cools and solidifies, the rocks formed are? Then correct answer, that is a igneous rocks. Next question, weathering is important process for what? Then correct answer, that is a formation of soil. नेक्स्ट, सो क्वेश्चन को थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा. अगर आपके पास एक सिंपल नॉलेज होगा तो आप आंसर कीजिएगा कि वेदरिंग किसके लिए, क्लाउड के लिए आप कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर होता है वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो आप करेक्ट आंसर को करके आइएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द अर्थ सरफेस रिसीव एनर्जी फ्रॉम विच? देन करेक्ट आंसर, दैट इज अ सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जियोमॉर्फिक कॉजेस फॉर द इरोजन? Then correct answer, that is all of the above. Next, which of the following is a form of weathering? weathering कौन सा प्रोसेस है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? all of the above. means it is a physical, it is also chemical, it is also a biological process. Next, the mineral which makes the saline soil useful for crops? Then correct answer, that is a gypsum. Next question, the erosional land form consists of which? Then correct answer, that is a valley. Next question, which of the following is created by soil erosion by the rivers? Then correct answer, that is a V-shaped valley. Next, which type of landforms are formed by rivers in youth stage? Then correct answer, that is a V-shaped valley. Next question, the boundary between troposphere and stratosphere is known as? Then correct answer, tropopause. Next, which atmospheric layer is important for human beings? Then correct answer, that is a troposphere. Next question, why the earth is having its own atmosphere? Then correct answer, that is a gravity. Next question, the ozone layer is present in which? Then correct answer, that is a stratosphere. Next question, what is the major role of a greenhouse gas that contributes to the temperature rise of the earth's surface? Then correct answer, D, lets incoming sunlight pass through but stops outgoing infrared radiation. Next question, the highest layer that can be accessed by jet powered aircraft? Then correct answer, that is a stratosphere. Next question, the dry wind Santa Ana blows in which? Then correct answer, that is a California. Next, difference in pressure on earth's surface cause which? Then correct answer, that is a wind. Next, angle made by the rays of sun on the earth's surface is called which? Then correct answer, angle of incidence. Next, which of the following has longest day and night? Then correct answer, on the poles. Next, the solar radiation received at any point of the earth is called? Then correct answer, that is insolation. Next, the atmosphere is mainly heated by which? Then correct answer, long wave terrestrial radiation. Next, the balance of incoming and outgoing radiation is called? Then correct answer, heat balance. Next question, heat energy absorbed by known area in a fixed time is determined by with which help of an instrument? Then correct is, that is perheliometer. Next, on what day earth is nearest to the sun? Then correct answer, that is that is 3rd January. Next, on what day the sun is overhead at the Tropic of Cancer? Then correct answer, that is 21st June. Next, monsoon is which? Then correct answer, that is seasonal wind. Next, air pressure is measured by which help? Then correct answer, that is a barometer. Next, the desert lying near the Tropic of Cancer belt in India, which is correct? Then correct answer, that is a Thar desert. Next, how many types of pressure belt are there? Then correct answer, that is 7. Next, the horizontal distribution of pressure is a study by drawing which? Then correct answer, that is isobar. Next, the intertropical convergence zone normally occurs? Then correct answer, that is near the equator. Next, the actual amount of water vapor present in the atmosphere is known as which? Then correct answer, that is absolute humidity. Next,
The chemically inactive gas present in the atmosphere is which? Then correct answer, that is a argon. Next, ozone layer is what? Then correct answer, that is a depletion of ozone layer in the stratosphere. Next, atmospheric pressure exerted on the earth is due to which? Then correct answer, that is a gravitational pull of the earth. Next, on the basis of origin, rainfall is classified into which categories? Then correct answer, that is a 3. Next, the ozone hole is detected in the atmosphere. Where is it located? Then correct answer, that is above Antarctica. Next, the innermost layer of earth is known as? Then correct answer, that is a baryosphere. Next, which factor increases the rate of evaporation? Then correct answer, that is all of these. Next, what is the percentage of nitrogen in the atmosphere of earth? Then correct answer, that is 78.03%. Next, the process that warm the atmosphere are often collectively referred to as which? Then correct answer, that is a greenhouse effect. Next, what is the greenhouse effect? Then correct answer, that is a certain gas in the atmosphere trap heat and warm the earth. This is the correct answer about the greenhouse effect. Next, which country leads in the production of rubber? Then correct answer, that is Indonesia. Next, in India, average annual rainfall is which? Then correct answer, that is 125 centimeter. Next, name the rainiest place in India. Then correct answer, that is Masinram. Next, which one of the following is the smallest ocean? एक बार आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, विच का बात हो रहा है तो आप पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर लीजिएगा, इनमें से कौन सबसे छोटा सा ओशियन है इसको आपको ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट, द जियोग्राफर्स हैव डिवाइडेड द ओशियनिक पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू विच नंबर ऑफ ओशियंस? देन करेक्ट आंसर, दैट इज 5. नेक्स्ट, द टाइड्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय विच? देन करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून. Next, what is the deepest part of all the ocean? Then correct answer, that is a Mariana Trench. Next, the earliest man on the earth is known as by which? Then correct answer, that is a Homo sapien. Next, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि विच इज अ प्लांट एनिमल कम्युनिटी दैट कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया? देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोम. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच? देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी मीन सब ट्रॉपिकल जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द अर्थ सबमिट वाज हेल्ड? इनमें से कौन सा कंट्री है जहाँ पे अर्थ सबमिट हुआ था? करेक्ट आंसर ब्राजील. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. कौन से ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था? करेक्ट आंसर 1972 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 का जो अर्थ सबमिट है वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर्स इज द स्मॉलेस्ट? देन करेक्ट आंसर भूटान है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया इज द, देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट टिप? कौन सा इंडिया का मेनलैंड का? देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिया हैज हाउ मेनी टाइम जोन? देन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट इज 11 टाइम जोन. नेक्स्ट है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज व्हाट? देन करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट. नेक्स्ट है, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर इज अ टाइम लैग ऑफ, कितने का टाइम लैग है? देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 आवर का टाइम लैग है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री? देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट सेपरेट्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका? श्रीलंका और इंडिया को कैसे, कौन सा वो सेपरेट करता है? देन करेक्ट आंसर क्या है? पाक स्ट्रेट. नेक्स्ट है, द साइंस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड? देन करेक्ट आंसर जियोलॉजी. नेक्स्ट, नेम द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ द हिमालयाज? देन करेक्ट आंसर दैट इज तेथिस सी. नेक्स्ट, द आउटर हिमालय इज नोन एज? देन करेक्ट आंसर बी, दैट इज शिवालिक. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज व्हाट टाइप? देन करेक्ट आंसर पेनिनसुलर प्लेटू टाइप. नेक्स्ट, which is the second largest basin in India? Then correct answer that is a Godavari and first largest भी गंगा, इसलिए इसको याद रखना है.
Next, what is the total length of the river Ganga? Then correct answer, that is a 2500 kilometer. Next, a river along with its tributaries is known as what? Then correct answer, that is a river system. Next, the Bang and the Lohit are the tributaries of the which river? Then correct answer, that is a Brahmaputra. Next, the world longest river is what? Then correct answer, that is a Nile river. Next, which place in India received lowest rainfall? Then correct answer, that is a Leh. Next, name the gas which has more effect on greenhouse effect. Then correct answer, that is a carbon dioxide. Next, name the coldest place in India. Then correct answer, that is a Dras. Next, where do you find the polar type of climate? Then correct answer, that is a Jammu Kashmir. Next, what type of winds are monsoon? Then correct answer, that is a seasonal winds are called monsoon. Next, which type of soil retains maximum water? Then correct answer, that is a clay soil. Next, blue revolution is related to which? Then correct answer, that is a fish production. Next, operation flood is related to which? Then correct answer, that is a milk production. Next, the soil of tropical region of which lime and silica are leached away, leaving behind the oxide of iron and aluminium in which soil? Then correct answer, that is a laterite. Next, black soils are best for growing which? Then correct answer, that is a C, that is a cotton. Next, agricultural commodities are graded with by what? Then correct answer, that is a egg mark. Next, Madhya Pradesh is the biggest producer of what? Then correct answer, that is a pulses. Next, which of the following is called brown paper? Then correct answer, that is a jute is called brown paper. Next, who among these govern head of the National Crisis Management Committee? Then correct answer, that is a that is a cabinet secretary. Next, where International Tsunami Information Center is located? Then correct answer, Honolulu. Next, which river is called in sorrow of Bengal? Then correct answer, that is a Damodar. And if asked about sorrow of बिहार सौरों के बारे में पूछे, देन करेक्ट आंसर दैट इज अ कोसी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी? देन करेक्ट आंसर दैट इज अ रेटजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड? देन करेक्ट आंसर दैट इज अ डी, दैट इज अ 3। नेक्स्ट द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? देन करेक्ट आंसर दैट इज अ हाईएस्ट इन केरला and lowest in Bihar. Next growing of flowers is called? Then correct answer, that is a floriculture. Next one point that you have to remember also, that agriculture be related to the primary sector. Second, infrastructure or manufacturing related to the secondary sector or secondary activities, and the service be related to the tertiary activities. These you have to keep a focus on this, and maybe question be related on this. That let us take a question, that which sector of the economy takes raw material from the primary sector and manufacture them into goods? It means primary sector से वो material लेता है और manufacture करता है, तो manufacturing is related to which? Then correct answer, that is a secondary. Next one question, hunting and gathering is which part of sector? Then correct answer, that is a primary. Next, which of the following industry is known as rust bowl? Then correct answer, that is a iron and steel industry. Next, the industry managed by government is known as which? Then correct answer, that is a public sector. Next, which stations are joined north-south corridor? Then correct answer, that is a Srinagar Kanyakumari corridor. Next, the national highway system is responsibility of which? Then correct answer, that is a central government. Next, which is the busiest sea route of the world? Then correct answer, that is a North Atlantic. Next, how many types of trade? Then correct answer, 4. Next, where is the WTO headquarters is located? Then correct answer, that is a Geneva. Next, Queen of Arabian Sea is called Kochi. Next, in which sector do the immigrants mostly work? Then correct answer, industry. Next, what are the cause of migration? Then correct answer, that be poverty, education and health. It means correct answer be D. Next, what is the full form of UNDP? Then correct answer,
United Nations Development Program. Next, which state has the highest per capita income in India? Then correct answer be Goa. Next, which one of the following crops is called fiber crops? Then correct answer be cotton. Next, Haryali program is related to the development of which? Then correct answer watershed development. Next, in which year national water policy was implemented? Then correct answer 2002. Next, Niru Miru program is associated with which? Then correct answer that is Andhra Pradesh. Next, which is the best quality of iron ore? Then correct answer that is a magnetite iron ore का. Next, what is the full form of HBJ? Means HBJ full form that is a Hazira Vijaypur Jagdishpur. Next, Bhabha Atomic Research Center is associated in which? Then correct answer be Tarapur. Next, which one of the following is not a renewable source of energy? Then correct answer that is a natural gas. Next, which mineral is called brown diamond? Then correct answer that is a lignite. Next, which mineral is known as liquid gold? Then correct answer that is a petroleum. Next, question B, which one of the following is the longest highway in India? Then correct answer NH7. Next, to trade between two countries is termed at? Then correct answer that is a international trade. Next question. So these are the most important questions that may be asked in your exam, in your PwC B.Ed entrance test from the geography section. So keep our attention on these questions that may be asked in your entrance exam, and best of luck for your entrance exam. Thank you.